Hello, everybody. I'm back, Dr. K.K. Agarwal, President Heart Care Foundation of India and Confederation of Medical Association of Asia and Oceania. And you are watching Med Talks with Dr. K.K. Agarwal, 1558 non-stop COVID edition and 195th Med Talks with Dr. K.K. Agarwal. Let's have the headlines of the day. Serum Institute seeks approval to conduct local trial for Novavax COVID vaccine. The US biotech firm Novavax has said that COVID-19 is 89.3% effective in preventing the killer virus in a trial conducted in the UK. COVID vaccination drive kicks off in Sri Lanka with Made in India vaccine. Pfizer vaccine not linked to post-jab death, says EU regulator, and AstraZeneca offer 8 million extra doses to EU through March. Before we invite our special guest, let's have the ritual of Atithi Devo Bhava. We take our sanitizer and we say Suman Ke, S for Sida, U for Ulta, M for Mutti, A for Angutha, N for Nakhun, or K for Kalai. Once we have done that, we are ready to invite our special guest. Let's have the subject of the day. The role of a civil society in a pandemic. And I have with me Dr. N M Prusty. The word Neel Madhav comes from the Odisha, is another name of Jagannath, another name of Lord Krishna. And we have two people. My name is Krishna, born on Janmashtami, and I have Neel Madhav, also meaning a Jagannath or Krishna. Similar name, both of us will be talking to each other. He studied engineering and management in India and USA, worked over 40 years in government, business, and the NGO sector, both in India and abroad, with roles from enterprise and entrepreneurship development, civil service to banking finance in the Ministry of SNE, PNB, ICICI to senior level management, etc., etc. His contributions are acknowledged by the Global Best Practices Award for Social Housing and nomination for the coveted Hubert Humphrey Fellowship and Raman Magsaysay Award. He currently mentors several startups in social business and techno-humanitarian action. He is the board chair for several international and national NGOs. More about him, we want to listen to him. What's the role of a civil society in management of a pandemic? Over to Dr. Prusty. Thank you, my Dr. Agarwal. I'm very delighted to find the similarity between our names. It's a privilege to join you in the talk show, and I have been watching you since long, especially in the COVID times, and your contribution, your advice, your inputs have been greatly helping the humanity in understanding the various facets of this deadly pandemic, COVID-19. I don't know how, being a non-doctor, I can speak to the doctors community. I guess the most of your listeners or viewers would be from the medical fraternity. So how I'll be able to place my discussion, I am little not too sure. Prusty, we are also live on Facebook and Twitter and YouTube. So बहुत सारे लोग public भी होगी यहाँ पे. Oh, that's great. That's great. So I have my constituency also in this audience. So that's said. Civil society organization CSO is a responsible fifth estate of the Indian Democratic Society. When I say fifth estate, the government, business, judiciary, and media, they are the four estates, and the fifth estate is the civil society. So it has a very important role in the management of COVID-19. Many of you would have seen the civil society action and civil society humanitarian organization, especially
the lockdown period, when the COVID the virus, the COVID-19 started impacting our society. You have seen that how these organizations, this section started helping the community by providing the dry ration, cooked food, water, fasted services, logistic support, conducting surveillance, running quarantine centers, running COVID care centers, rapid sanitization in the high footfall areas, then community awareness development. All these things they did for several months, and many of them are also continuing to do that. And in fact, some of the organizations even gone beyond that, working in the area of frontline system development, the COVID safe frontline system, and COVID safe frontline workers preparation that is happening, and the COVID safe workplace and COVID appropriate behavior rollout is happening. At least I know about one organization, Vision Spring International, whom I am the India board chair. They have developed, in partnership with the All India Institute of Medical Science, Delhi, they have developed the protocol for COVID safe eye screening system, that how the rollout can happen and all that. And this has been tested, piloted, and all that, and is in the now rollout phase. So that and then there are another organization I know about, the where also I'm associated, a Drone for Humanity, Humanitarian Aid International, where they have been able to do micro surveillance, rapid sanitization, community awareness building using drones and artificial intelligence, etc. So those are the kind of things that the civil society has done. Coming to the point of CSO role in COVID vaccine rollout, I may say something very specific. If people say, and it's a fact, India is the global pharmacy, the pharmacy of the world. India's vaccination program has always remained as one of the biggest vaccination program. But would you look at what we have been achieved is about 20 crore a year of per year vaccination. But today, in this COVID context, we are talking about vaccinating 130 crore people, if you have to really make universal immunization and saturation of the entire country with the vaccination, and that too in a very short span of time, in a year. So this is something very unique. No WHO protocol, no UNICEF protocol, no Rotary International protocol is going to help. A protocol that we have to really develop within our country, by our doctors, by our management personnel, by our administrators, by our system, so that we create a history for the mankind for generations of such a large scale vaccination. The second point, the other day I was listening to the head of WHO and the Secretary General of United Nations. They were saying that both were saying similar thing, that COVID-19 pandemic is a problem of the entire humanity. Hence, it calls for a dedicated humanitarian action that is collective, collaborative, participatory in true spirit of partnership among countries and among stakeholders. Why I'm mentioning this is that India, it's the quote is pretty analogous to India, because India is a mini world. India is a nation within nation, and many social scientists have named India as nation state. So in this situation, so the spirit of partnership, spirit of collaboration with humanitarian imperatives is the necessity. Thus, the role of civil society, the fifth estate of our democracy, is very important. Now, coming to be very specific, what we can do in this rollout, that I'll be making one single sentence, or maybe a couple of sentences, and Dr. Agrawal will be, all of you will be able to understand and make a meaning out of it. If time permits, you can also ask any clarification. Me and Dr. Agrawal will try to also provide clarification.
Like, I'll give you now list, a bouquet. Make people risk informed. COVID risk, how that civil society will be able to do in a big way. Remove vaccine hesitancy. How will a lot of people are still thinking whether we should take vaccine or not vaccine. So that has how this can be removed. What are these conditions of taking vaccines, and what is the condition that do not encourage you to take vaccine, and all that, and how people will have this the fear removed, and all that. How we can, like people say, I also believe strongly that our leaders, like our prime minister, our chief ministers, and our CSO leaders, our celebrities, should take vaccination publicly, so that the people faith in the vaccination rises. In fact, the other day when Dr. Guleria, Director AIMS, took vaccine, I think that has created a huge impact on the people, that seeing the people who have been listening to Dr. Guleria and he is taking the vaccination in public, that has created impact. Then next is that mobilize community in support of vaccination. In the remote places, when you talk to community, you can go to the focus group discussion, and that will help people to think that vaccination is a necessity, and vaccination is not harmful, and all that. Then aid access to vaccination to ensure no one is left behind. Because it is a big country, and the remoteness is there. Problems will be there, logistic problems will be there, communication problems will be there, understanding problems are there. So how we can create a system, how we facilitate access to vaccination, so that we are pretty close to a situation that no one is left behind. Define frontline. When we say government says, or the announcement says that frontline will be vaccinated, so frontline, let's define. And today the community or the society is unclear about who is frontline. Frontline, even the health sector, health professionals are the frontline, but there are police frontline. The government declared it, but there are many frontline in the informal sector. Let me tell your thelawala who brings vegetable to you, the rickshawala who carries you, the chai wala who gives you tea, the saloon wala who cuts your hair, are they not frontline? So how we are going to reach to that frontline, define or even identify the frontline? So how we can do this, the frontline access? Then spread the necessary COVID appropriate behavior. We have done guidelines we have issued. How we can go beyond the guidelines in promoting COVID appropriate behavior. Here is important role that I can envision for the civil society. Then comprehensive surveillance, micro surveillance using technology, by which, like we tried by using drones, we could see the social distancing phenomena, what is the level of the social distancing, how the level of mask use, and all that. So there will be many methods. A lot of organizations are working on various conceptual approaches to ensure that our surveillance is complete. But this surveillance has to become micro, because very concentrated way in smaller places we should promote the surveillance. Then community counseling, not to hide the infection. This stigmatization. A lot of people, at least I know in my lane where I live, after many months, we could find that someone was, the whole family got COVID affected, but they have kept it so secret that nobody knew it. Even the house support service providers they made and all that, they couldn't also know. But this is so bad. So how people will not think that getting COVID is a stigma? So that community, so the civil society can do. Creating a positive mindset for COVID treatment. Accept vaccination as a remedy. When the turn comes, we should be prepared to take vaccination. That kind of understanding eligibility criteria and entitlements. Who is entitled to get free vaccine? Who is not entitled to get free vaccine? Who is eligible? Who is not eligible? That kind of awareness, and tracking access, how this access is taking place, removing the myth about vaccination, preventing rumors and misinformation. There are a lot of misinformation is also being spread, and rumors are also getting spread. How do we deal with that?
it is a new disaster. It is a new disease, and the treatment is also new. The mindset has to be new. So we have to be prepared, and civil society can help in promoting this kind of mindset. So I guess the CSO can do it best. And the Gram Sabhas are there, your Jati Panchayat, caste panchayats are there. Though the discussion on COVID, the all aspects of COVID must go to that level, so that every individual is able to know that this is a new disease, it is so grievous. So how they have to be prepared, and how you have to be behavior has to be developed, how they have to maintain themselves, and how they have to access the treatment, etc. Then provide escort service to the vaccine recipients. All recipients cannot get, like so how the civil society can really, because civil society work in the length and breadth of the country, their outreach is very huge, so they can even provide that escort service to the recipients, going to the vaccine center, getting the formalities attended and all that vaccine, and assisting the vaccination centers. Even the civil society can assist the vaccination centers to perform the role of vaccination with the recipients. In many ways, they can provide them logistic support in the remote location. Then another important thing I believe is that the COVID fear also create trauma. So how the community can be provided with psychosocial care, and especially the frontline workers, they many times they are also scared of COVID, and so they are afraid of getting into their work. Work has to be done. They have to get their livelihood, and they have to provide service to others also. So how that their trauma can be dealt with. So therefore, appropriate psychosocial care instruments need to be. So I'll come back, Dr. Prusty. Dr. Prusty, I'll now, because the time is short, I have only 13 minutes. So I'd like to have a dialogue and a question answer. मेरा पहला है, what is the difference between a civil society and NGO? NGO is a part of civil society. As I said, that this is the fifth state. So there are various forms of NGOs, like trusts, foundations, like that. So all of them are civil society. So all will come into a civil society. That's right. Okay. So an independent organization who is working as on a trust society or whatever it is, they will come back into a civil society. That's one. Number. Yeah. So number two, as on today, they have their working is governed by whom? As far as pandemic is concerned, are they registered with the government for pandemic work or what? No, actually, the organizations have their mandate. Some work on health, some work on water, some education, like that, and it is there written in their article of association, and they are registered with the registration authority, like the register of societies, and then the Section 8 companies are registered with the registered companies, and the trusts are registered with the district authorities. So they are various registration formalities, and this is articulated in their constitution, that which area they. And disaster management is one of the areas which is cross-cutting. So all the civil society organizations, by and large, get involved. So COVID-19 has been categorized as a pandemic, as a disaster. So most of the civil society organizations are engaged in the pandemic. मेरे कहने का मतलब था कि was there a organized group under which, like let us say NDMA, disaster management, were they coordinating between various civil societies, or they were independently working? No, we have in fact, the humanitarian organization, we have formed a coalition called Spear India. It's a national coalition of humanitarian organizations, and we work very closely with the government of India. In fact, government of India also is the biggest humanitarian organization. It's a part of the Spear India coalition, and we work closely with NDMA. And NDMA holds periodical meeting of all the NGOs. So there is well coordinated. And the Niti Aayog also coordinate through their Darpan platform. So various processes are there to monitor the activities of these NGOs. So आज की डेट में वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए हम क्या 5 चीजें कर रहे हैं जिससे लोगों की हेजिटेंसी खत्म हो?
forget about the public, even there is an hesitancy amongst doctors also, which we are trying to remove. तो आज की डेट में 5 बेसिक कंसर्न क्या है पब्लिक के कि उन्हें वैक्सीन से डर लग रहा है? ये सिविल सोसाइटी पहले तो हम उनका जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको एक्सप्लेन करता है कि वैक्सीनेशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू डील विद दिस कोविड-19. So they are better prepared, and then उनको बता जाता है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो और social distancing maintain karo and go to the field and do this. And also there many of the NGOs, they are also creating COVID safe workplace for themselves. So as a result that they are able to reach out to the community. मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में पब्लिक के मन में क्या 5 डर हैं कि वैक्सीन लगाते हुए उन्हें डर लग रहा है. उनको डर है कि वैक्सीन लगाने के बाद और एक बार कोविड होएगा कि नहीं, व्हाट इज द गारंटी. एंड देन सेकंड फियर होता है कि कोविड वैक्सीन लगाने से क्या इफेक्ट होगा, कि क्योंकि टीवी में आता है आदमी मर गया, आदमी को ये हो गया तो क्या होता है. देन थर्ड फियर होता है कि मेरे को एक बार वैक्सीन लूंगा कि 2 बार लूंगा, और 2 बार लेने के बाद गारंटी क्या है कि और बार मेरे को भी लेना पड़ेगा. और तीसरा होता है कि वैक्सीन हमको फ्री मिलेगा, ना पैसा देना पड़ेगा, और वैक्सीन को कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा और कितना वेट करना पड़ेगा. ये जो लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहता है. इवन लॉट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर अनक्लियर अबाउट. पहला सवाल है कि वैक्सीन से मेरे को कितने प्रतिशत फायदा मिलेगा. उसका आंसर है 100%. हाँ, कि 100% ये है कि अगर आपके वैक्सीन के बाद आपको कोविड हुआ तो हल्का होगा. ये मैसेज बहुत जरूरी है. ये मैसेज बहुत जरूरी है. एंड ये मैसेज सिविल सोसाइटी के पास नहीं है आज. तो ये मैसेज जो है, सबसे पहला मैसेज है कि अगर आपको कोविड हो गया तो खतरनाक नहीं होगा. नंबर 2, वेरी गुड, आपके पास कोविड या वैक्सीन के अलावा तीसरी चॉइस नहीं है. या कोविड मिलेगा या वैक्सीन मिलेगा, तीसरी चॉइस नहीं है. और अगर वैक्सीन नहीं लेना है तो कोविड ले लो, और दोनों में कोविड ज्यादा खतरनाक है. तो आपके पास चॉइस है क्या? या तो लोग बोलें कि हमारी चॉइस है कि ना हमें कोविड चाहिए ना हमें वैक्सीन चाहिए. ये चॉइस तो है ही नहीं. अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो कोविड लेना पड़ेगा, और कोविड में खतरा ज्यादा है. तीसरा, बट वैक्सीन में तो शायद खतरा नहीं है. हम जो जानते हैं कि हम जो पढ़े हैं सुने हैं, कोविड में खतरा नहीं है. कोविड खतरा नहीं है, ये मैसेज लोगों के पास पहुंचना जरूरी है. लोगों के पास कुछ घबराहट है. बता रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना. स्पीयर इंडिया को आप बताएंगे ना मैसेज. हाँ, बिल्कुल बताएंगे. बिल्कुल आप जो अभी बताए वो मैसेज आई एम गोइंग टू गिव इट. वही बता रहा हूँ ना कि आपके पास में या कोविड ले लो या वैक्सीन ले लो. बिल्कुल सही है. कोविड ज्यादा खतरनाक है, वैक्सीन खतरनाक नहीं है. और वैक्सीन 100% लोगों को बीमारी को हल्का बनाएगा. 100% लोगों की बीमारी को हल्का बनाएगा. और उसके अलावा दोनों में फर्क क्या है? वो भी कोविड है, ये भी कोविड है. देखिए, मुंह से कोविड लोगे तो उसमें आपके 7 दिन तक अंदर में प्रोटीन की सप्लाई होती जाएगी. वायरस के अंदर ही अंदर प्रोटीन सप्लाई होगा. यहाँ पे एक बार होगा. वो लंग का कोविड है, ये मसल का कोविड है. वैक्सीन भी तो कोविड ही है. ये मसल का कोविड है. मसल में कोविड को तो डाल ही रहे हो आप. वैक्सीन में भी तो कोविड तो कर ही रहे हो आप. लेकिन यहाँ पे आपने एक फिक्स डोज दी, वहां पे कंटिन्यूअस सप्लाई है चोरों की. तो ये मेरे कंट्रोल में है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. वेरी गुड, यस, ठीक है ना. तो आज की डेट में खतरा किस चीज का है? एलर्जी का. तो एलर्जी की दवाई लेके जाओ कोविड का इंजेक्शन लेने के लिए. भाई, जितने मेरे घर में जितने भी डॉक्टर, जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, सबको मैं बोल रहा हूँ एलर्जी की दवाई लेके जाओ वैक्सीन लेने के लिए. इसको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसके साथ में, ना हो भी सकता है इसके साथ में. और ये जो लोग 5 लोगों की मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से भारत के अंदर में, भारत में 12 लाख लोग तो मतलब हर साल हार्ट अटैक से मरते हैं.
एक साल में तो 1 लाख एक महीने के मरे, यानी कि 3,000 रोज के मरेंगे। आजकल तो मर ही नहीं रहे, 5 तो बहुत, वैक्सीन लगने के बाद में जो हर साल हार्ट अटैक मरते हैं वो तो मरेंगे। अगर आप हाई रिस्क हो तो अपने डॉक्टर से तो बात करोगे ना। अब जो पहले आदमी की जिसकी मृत्यु हुई, उसके पोस्टमार्टम में पूरे लंग्स में पस निकली, इसका मतलब उसे तकलीफ चल रही थी, फिर भी वो वैक्सीन लगवाने गया। सो अगर आपको कोई तकलीफ है, डॉक्टर से क्लियरेंस तो लोगे ना कि मैं वैक्सीन लगवा लूं क्या। दिस मैसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप वैक्सीन के लिए फिट नहीं हो तो वायरस तो आपको मारेगा ही मारेगा। भाई इसका मतलब क्या है। अब लोगों के मन में डर आया नॉर्वे से, 33% लोगों को जो डेथ हुई, वो कौन लोग थे। वो सारे वो लोग थे जिनकी मौत 30 दिन में होनी थी। ओके, टर्मिनल केयर वाले लोग थे। उनको आपने वैक्सीन लगाया। ये तो आपको एंटिसिपेट करना चाहिए कि वो तो हल्का सा बुखार भी सहन नहीं कर पाएंगे। भाई कोविड से, वैक्सीन से बुखार तो हो सकता है ना। तो अगर आपको बुखार हो गया, अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप बुखार भी सहन नहीं कर पाओगे, फिर तो वैक्सीन आपके लिए खतरनाक होगा ना। बुखार तो करेगा ना वो कई लोगों में। बिल्कुल। सो ये जो आज की डेट में ये मैसेज सिविल सोसाइटीज को जाना बहुत जरूरी है कि आपके पास चॉइस नहीं है ना। वायरस के पास चॉइस है क्या, वो तो किसी के अंदर भी घुसेगा। ट्रू। तो आपके पास भी कहाँ चॉइस है। तो मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए, सारी सिविल सोसाइटीज के साथ में एक वैक्सीन हेजिटेंसी पे प्रोग्राम करना चाहिए। ओके, गुड। आप लोग कर रहे होंगे, आप लोग, सरकार भी कर रही होगी, लेकिन जितना खुल के प्राइवेट सेक्टर बोल सकता है, सरकार खुल के नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी, यू आर करेक्ट। वो हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोग बोल सकते हैं। आपको जिस दिन मिलेगा उस दिन जाके लगाओगे कि आप भी डरोगे थोड़ा सा। नहीं, जो दिन हमारा टर्म आएगा उस दिन तो लेना चाहिए। इनफैक्ट दैट मैसेज शुड गो वेरी क्लियरली। लेकिन सर, जो वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन, वो जानकारी अभी पब्लिकली नहीं है कि तो मैं बता रहा हूँ कि 100% लोग वैक्सीन लेने चाहिए, और जो अनफिट हैं उनको फिट करना डॉक्टर का काम है। That's right, that's right. मतलब वी कैन मेक एनीबडी, देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर आपको कोई तकलीफ है तो हम बताएंगे कि वैक्सीन लेते हुए क्या करो ताकि आपको तकलीफ ना हो, कौन सी दवाइयां लो ताकि वैक्सीन आपको तंग ना करे। ये तो डॉक्टरी का काम है। एक्सीलेंट। तो आज की डेट में वैक्सीन तो सबको लेना है, मैंने भी लगवाया, सबको लगवाना है। चलो जाते जाते 5 मैसेजेस सम अप करके जाइए। एक तो हम कोविड वैक्सीन हेजिटेंसी निकालेंगे, और हम लास्ट माइल रीच आउट करेंगे, एंड हम ट्रॉमा रिमूवल करेंगे, स्टिग्मेटाइजेशन रिमूवल करेंगे, और हम फ्रंटलाइन को तैयार करेंगे। हमारा जो ANM है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, उनको हम अच्छी तरह तैयार करेंगे, सो दैट हमारा जो नॉर्मल फंक्शन, सोसाइटल फंक्शन जो है वो प्रिवेंट ये नहीं होगा। एंड देन मैं तो बोलता हूँ कि वैक्सीन में जो डोजेस है, 1 डोज 2 बार लेना पड़ेगा, 2 डोज लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सपोर्ट चाहिए क्योंकि लोग भूल जाएंगे। देन सर, और एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जो देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे हम काम करते हैं रिफ्यूजी कम्युनिटी, उनका आई कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उनका तो एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। जो माइग्रेंट वर्कर है वो एक जगह पे रहता है, दूसरा जगह पे जाता है, 1 डोज इधर लिया और दूसरा डोज उधर मिलेगा। तो ये लोगों को स्पेशल ट्रैकिंग सिस्टम में डालना पड़ेगा, सो दैट दे डू नॉट गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द वैक्सीनेशन। और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में 2 महीने में आ जाएगा। फिर आपको बाजार से खरीदो, लगवा लो, आपकी जिम्मेवारी रहेगी। बिल्कुल भाई आपके पास में ये, और थोड़े दिनों में, और कुछ 1-2 महीने के अंदर में या 3 महीने में वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में आएगा। जैसे ही तीसरी कंपनी आएगी बनाने के लिए, अब जैसे ये मॉडर्ना को और अगर फाइजर को पास कर दे तो प्राइवेट सेक्टर में तैयार है वैक्सीन, जिनको लगवाना है लगवाए, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल होएगा, ना होने का मतलब ही नहीं। सर, एक तब ये सब चीज जब होएगा, इतना बड़ा स्केल में होता है, इसमें सब सोशल वॉच जरूरत है
so that manipulation, system manipulation नहीं हुए। और उनका हमको मेरा एक सोच है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, लाइक मैं सोचता हूँ कि कोविड ऑम्बुड्समैन जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए गवर्नमेंट, सो दैट ये कोई सिस्टम फेल्योर जैसे नहीं हुए, क्योंकि हमारा देश में सिस्टम फेल्योर का बहुत इंस्टेंस है, तो लार्ज सिस्टम एंड लार्ज फेल्योर्स, तो ये हमको जरूरी मैं सोचता हूँ होना चाहिए ये। और हमने एक काम कर रहे हैं कि भी वर्चुअल केयर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर वर्किंग सो दैट द पीपल कैन एक्सेस ऑल कोविड रिलेटेड सर्विसेज डिजिटली। ये भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, आपको भी पता होगा, ये सब चीज चल रहा है। तो ये सब चीज को हम स्केल में लानेंगे तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा, मेरा दिमाग में मेरा सोच है। चलो बड़ा अच्छा रहा आपसे एक सर फाइनेंसिंग वैक्सीनेशन, कैन वैक्सीनेशन बी कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस कवर फॉर द एटलीस्ट द जो अभी हमारा जो नहीं, वो आज की डेट में तो कवर्ड नहीं है, इसे इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप एडमिटेड हो और वैक्सीन लगता है तो कवर्ड है। नहीं, हमारे जो फ्रंटलाइन जो गरीब लोगों को हम वैक्सीन करेंगे, उनका जो स्कीम है, हमारा जो जन आरोग्य स्कीम है, उसमें वैक्सीन को इंक्लूड करा जा सकता है, so that the poor fellow will not spend that 700, 800 rupees or 1000 rupees in vaccination. It will come from insurance. ऐसे हो सकता है ना? क्या नहीं, क्या लिमिटेशन है? देखिए, सरकार तो जितने भी लोगों को, सरकार के पास 40 करोड़ लोग हैं, उनको तो सरकार को फ्री देना ही होगा। 60 करोड़ लोग अपना खरीदे, देयर इज नो चॉइस सरकार के पास में कि सरकार उनको तो फ्री देगी। ठीक है, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, जो आपका जो रिक्शा चलाता है, जो आपको सब्जी देता है, ये लोगों, और जो इसको हेल्प करने के लिए तो सिविल सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड so that they raise money and then they should buy from the market and all। वो इस काम के लिए जीएसटी एग्जम्पशन की कुछ ऐसे कुछ फिस्कल बेनिफिट तब लाएंगे गवर्नमेंट। होगा कि जो आरडब्ल्यूए है, अपने अपने एरियाज के अंदर में आप सब्जी खरीदने जा रहे हो तो आप भी तो स्पॉन्सर कर सकते हो ना। मतलब सिविल सोसाइटीज विल टॉक टू आरडब्ल्यूए, सारे लोग पैसे कंट्रीब्यूट करें और उस एरिया के सारे हॉकर्स को फ्री लगाएं। हम गुड़गांव में ऐसे प्लान कर रहे हैं, आप जैसे आइडिया दे रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्लानिंग। चलो, तो ये थे नीलम, ये थे नील माधव सृष्टि जी मेरे साथ में सिविल सोसाइटी से। आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, जो आपने इतने अच्छे से लोगों को सिविल सोसाइटी के बारे में बताया। That's all for today. We will be back tomorrow 7 p.m. with another show. Keep watching Med Talks with Dr. K. Agarwal. Namaskar. Namaskar. Thank you very much.